हाँ जी, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to learn about Kanthapura by Raja Rao. Subject is Indian Literature in English of MA English Semester 3rd. So these are some of the previous year questions that we are going to cover in this video. So first of all we will write about the writer. So अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले आपने राइटर के बारे में लिखना है. ओके. सो इंट्रोडक्शन टू द राइटर. राजा राव, जिनका टाइम पीरियड था फ्रॉम 1908 to 2006, was famous Indian writer known for his novels and essays in English. He is considered as one of the pioneers of Indian writing in English. So, pioneer क्या होता है? Who create, who begins. Okay, so वो pioneer थे of Indian writing in English and is best known for blending Indian culture, spirituality and philosophy into his works. His writing style is unique because he used English in a way that reflect Indian traditions and speech. Rajarao won many awards for his contribution to literature, including Sahitya Akademi Award and Padam Bhushan. And next are some of his novels. First is Kanthapura, second is The Serpent and the Rope, The Cat and Shakespeare, Comrade Kirillov, The Chessmaster and His Moves. And some of his short stories are The Cow of the Barricades and Other Stories, On the Ganga Ghat. Okay. Hanji, so next we will write about the introduction to the novel Kanthapura. So Kanthapura is a famous novel written by Indian author Raja Rao in the year 1938. It is one of the most important works in Indian English literature. The story is set in small South Indian village named Kanthapura and depicts the impact of India's freedom struggle on the lives of ordinary villagers. The novel is written in the form of Sthal Puran. In English, it's Sthal Puran, and in Hindi, it's Sthal Puran. Okay, which means a legendary history of a place blending myth, folklore, and history. The narrator is an old woman named Achakka. Tell the story in simple, flowing style. The central character is Murthy, a young idealist man inspired by Mahatma Gandhi's principle of non-violence and truth. He introduced the villagers to Gandhian ideals and encouraged them to join the freedom movement. The novel portrays how villagers, despite their caste differences and hardships, unite for the cause of independence. Okay. हाँ जी, सो अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट अबाउट द राइटर एंड आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन टू द वर्क. ओके, एंड नेक्स्ट you have to read the question properly, and from the perspective of question you have to attempt the answer. Like we have some previous year questions. First is write an illustrative note on the style of prose fiction in Raja Rao's Kanthapura, or how does Raja Rao Indianize the foreign tongue in novel Kanthapura. So अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ गया then you can write this answer. Okay. Style of prose fiction and novel. Raja Rao's Kanthapura is famous for its unique narrative style, which blends traditional Indian storytelling with modern prose fiction technique. So, first point is written as Sthal Puran. The novel is written in the style of Sthal Puran, which means legendary history of a place. सो कांठापुरा को स्थल पुराण की तरह लिखा गया है. स्थल पुराण का मतलब है किसी जगह की ओल्ड एंड हिस्टोरिकल स्टोरी. इन इंडियन ट्रेडिशन स्थल पुराण टेल्स द मिथ्स, स्टोरीज एंड सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ अ पर्टिकुलर विलेज और रीजन. सो इंडियन ट्रेडिशन में स्थल पुराण किसी विलेज एंड प्लेस के मेन इवेंट्स एंड स्टोरीज को बताते हैं. कांठापुरा को कहानी के कांठापुरा की कहानी को इस तरह बताया गया है जैसे ये पुरानी पीढ़ियों से सुनाई जा रही हो. ओके, सो इन कांठापुरा द विलेज इटसेल्फ बिकम द सेंट्रल फोकस एंड द स्टोरी ऑफ इट्स पीपल इज नरेटेड लाइक अ लेजेंड पास डाउन थ्रू जनरेशंस. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू.
हाँ जी, so next is old narrative tradition. The story is told by Achakka, an old woman from village in conversation style. It feels like she is narrating the tale to an audience, as is common in Indian oral storytelling. सो अचक्का कांठापुरा की स्टोरी को नरेट करती है। वो इस तरह बोलती है जैसे किसी सभा में लोगों को अपनी बात सुना रही हो। सो ये इंडियन रूरल विलेज की उस परंपरा को दिखाता है वेयर कहानियाँ सुनाई जाती है। सो ये तरीका इंटरेस्टिंग है जिससे रीडर को ऐसा लगता है जैसे वो खुद विलेजर्स के साथ बैठकर कहानी को सुन रहे हो। ओके, नेक्स्ट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन एलिमेंट्स. Raja Rao weaves Indian words, phrases, and cultural references into narratives such as Dhoti, Namaskar, and Harikatha. सो इस नावल में राजा राव ने इंग्लिश लैंग्वेज को इंडियन लैंग्वेज में डालकर उसे हमारे कल्चर के करीब बनाया है। इंडियन वर्ड्स लाइक नमस्कार, धर्म, हरि कथा बिना किसी चेंज से इन वर्ड्स को यूज़ किया है। ओके, सो इन दिस वे फॉरेन इंग्लिश लैंग्वेज को इंडियन लैंग्वेज में डालकर उसे हमारे इंडियन कल्चर का हिस्सा बनाया है। Phrases like the sky is as blue as Krishna's peacock feather and untranslated terms such as karam dharam Indianize the foreign tongue, allowing the novel to retain its cultural authenticity. Other phrases like the rains comes in torrents as if gods were angry reflect Indian metaphors and imagery. He retains the rhythm and tone of Indian vernacular languages, making English sound natural to Indian context. I hope this point is clear to you because I have used very simple language, very easy words. Okay. Hanji, so the last point is blending the spiritual and political. Rajarao merges the spiritual ethos of India with the political narrative of the independence movement. The language used to describe Gandhian ideals and non-violent resistance reflect the devotional tone of Indian spirituality. सो राजाराव ने इंडिया की आध्यात्मिक सोच एंड आज़ादी के आंदोलन की पॉलिटिक्स को एक साथ जोड़ा है। ओके, सम ऑफ द एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट आर like in the novel, the villagers' conversation and Achakka's narration are filled with the expressions like, he is like the small bull of Shiva, our Murthy. Second is, we shall have a Ram Rajya, they say. Okay, so these lines reflect the Indian way of thinking and speaking, seamlessly blending culture, religion, and politics in a language that feels authentically Indian despite being English. So, in conclusion, Raja Rao successfully Indianized English in Kantapura by infusing it with the soul of Indian culture, thought, and tradition. I hope the answer of these two questions are clear to you. Okay, so अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए then you can write this answer. हाँ जी, so other previous year question is, does Rajarao's Kanthapura reflect Gandhiji's spiritualism and national politics in India in the wake of the national struggle for independence? Explain with textual references. So the answer to this question is yes. Rajarao's Kanthapura reflect Gandhiji's spiritualism and national politics during Indian struggle for independence. The novel is set in small village in South India and it's strongly influenced by Gandhi's ideals of non-violence, truth and self-reliance. Through the character of Murthy and the transformation of the villagers, the novel shows how Gandhian principle inspired ordinary people to join the freedom movement. So our first main point of this answer is Murthy as Gandhiji's disciple. ओके, सो मूर्ति इस कहानी का मेन करेक्टर है। वो गांधी वो गांधी जी की तरह खादी पहनता है, फॉरेन गुड्स को रिजेक्ट करता है एंड सबको बराबर मानता है। वो कास्ट सिस्टम को अबॉलिश करना चाहता है। ओके, सो मूर्ति द सेंट्रल करेक्टर इज पोर्ट्रेट एज अ फॉलोअर ऑफ गांधी जी's टीचिंग. He adopt Gandhian ideals such as spinning khadi, rejecting foreign goods,
and promoting equality. For instance, Murthy works to abolish caste distinction in the village, encouraging the Brahmins and Parihas, lower castes, to unite. Next is textual reference. Isn't Gandhi himself a Bania? Yet see how fights for Pariha and the man of street. And isn't he the beloved of millions? So this line shows how Gandhi's example inspired Murthy to challenge caste barriers. Okay, second is non-violence and satyagraha. सो मूर्थी विलेज में नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह सिखाता है। वो कहता है कि लड़ाई बिना हिंसा भी लड़ी जा सकती है। जब उसे जेल में डाल दिया जाता है तो विलेजर्स गांधी जी के रास्ते पर चलते हैं। ओके, सो मूर्थी लीड द विलेजर्स इन प्रैक्टिसिंग सत्याग्रह, नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश ऑपरेशन। ही ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट, boycotts foreign goods, and inspire others to remain peaceful even when facing violence. Okay, so the textual references: when Murthy is arrested, the villagers continue the struggle peacefully, inspired by Gandhiji's message: we shall resist, we shall win, we shall die, but we shall not move from the path of truth. Third is role of religion and spirituality. So, Gandhiji's spiritual influence is evident in how villagers blend religion with politics. They view the freedom struggle as divine mission, often comparing Gandhiji's to Lord Rama or Krishna. सो कांठापुरा विलेज के लोग गांधी जी को भगवान राम की तरह मानते हैं। वो सोचते हैं कि आज़ादी की लड़ाई एक पवित्र काम है। गांधी जी के विचार उनके लिए सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि एक धर्म एंड सच्चाई का रास्ता है। टेक्सचुअल रेफरेंस: द नरेटर से गांधी जी इज अवर रामा, ही विल ब्रिंग अस राम राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड. So this shows how Gandhiji's leadership was idealized as spiritual force for justice and liberation. Okay, next point is women in freedom movement. So इस क्वेश्चन में आप ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड कर सकते हैं एंड ये वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया था. So the question is, discuss how Raja Rao highlight the role played by politically conscious women characters in Indian freedom struggle in Kantapura. Okay, so the answer to this question is this. So Raja Rao highlights the significant role of political conscious women in Indians' freedom struggle. He portrays women as active participants who breaks gender's roles and contribute to the movement with courage and determination. The novel presents women not as a passive observers but as leaders and agents of change inspired by Gandhian ideals. सो इस नॉवल में दिखाया गया है कि विमेंस सिर्फ पैसिव ऑब्जर्वर्स मीन्स देखने वाली नहीं थी बल्कि लीडर्स एंड एजेंट्स थी, एक इम्पॉर्टेंट शक्ति थी फ्रीडम मूवमेंट में. ओके हाँ जी, सो फर्स्ट मेन करेक्टर इज रंगमा द लीडर. Rangama is one of the most important women character in the novel. She is well educated and politically aware, which makes her guiding force in the village. So novel में सबसे समझदार एंड वेल एजुकेटेड विमेन थी रंगमा. वो गांधी जी के विचारों को समझती है एंड उन्हें पूरे विलेज में फैलाती है. एंड व्हेन इन द नॉवल मूर्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है, देन रंगमा वुमेन को एकजुट करती है. व्हेन मूर्ति इज अरेस्टेड, Rangama take charge and organize the women in Kantapura. Okay, so example from the text is Rangama organized the women to picket toddy shops and participate in protest against British rule. She spread Gandhian ideas saying women have duty to stand up for truth and justice. Okay, second women character is Ratna, the young rebel. Ratna, a young widow, defies societal norms by being outspoken and participating in public activities. Despite the criticism she faced for not adhering to traditional widowhood, Ratna actively supported the movement. She represents younger generation of political conscious women
who are bold and fearless. सो रत्ना एक विधवा है, लेकिन वो समाज को समाज के जो पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको नहीं मानती। वो खुलकर अपनी बात कहती है एंड फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती है। लोग उसे क्रिटिसाइज भी करते हैं बिकॉज वो विधवा की जो परंपराएं होती है उनका पालन नहीं करती, बट वो किसी की केयर नहीं करती, किसी से डरती नहीं। एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट इज Ratnas lead the women in singing patriotic songs and marching during protest, showing her courage and dedication to the cause. Next point is women as protesters and fighters. The women in Kantapura, inspired by Gandhiji's call for freedom, take an active role in the Satyagraha movement. They spin khadi, boycott foreign goods, and participate in marches. Next point is empowerment through the freedom struggle. The novel portrays how the freedom movement empowers women, giving them a sense of purpose and equality. It helps them to step out of their traditional roles and participate in shaping India's future. Raja Rao's highlight how women become a symbol of change during this time. Next is conclusion. सो नॉवल का कंक्लूजन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की विक्ट्री एंड सेक्रीफाइस को दिखाता है। नॉवल में विलेज का डिस्ट्रक्शन एंड वहाँ के लोगों का बिखराव ये बताता है कि फ्रीडम पाने के लिए कितनी कीमत हमें कितनी कीमत बड़ी है, लेकिन साथ में ये भी सिखाता है कि लोगों के अंदर का संघर्ष और हिम्मत कभी ख़त्म नहीं हुई। कांठापुरा विलेज जो पूरे भारत का प्रतीक है भले ही नष्ट हो गया, लेकिन विलेजर्स की यूनिटी, डिवोशन, करेज एंड गांधी जी के आइडियल्स के प्रति उनका विश्वास बना रहा। ओके, so the conclusion of Raja Rao's Kantapura is powerful reflection of triumphs and sacrifice of India's freedom struggle. Through the destruction of the village and dispersal of its inhabitants, Raja Rao poignantly symbolizes both the cost of independence and indomitable spirit of resistance. Kantapura, as a microcosm of India, may be destroyed physically, but its soul embodied in the villagers' courage, unity, and devotion to Gandhian ideals remains unbroken. So I hope this novel is clear to you. जेकर मेरे को कोई गलती होगी होवे देन प्लीज़ मैनू माफ़ करियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।